Hello students, in previous class I have discussed some reactivity of potassium permanganate. Okay, in today's lecture I will discuss potassium dichromate. Okay, how you can prepare potassium dichromate, preparation, properties, reactivity of potassium dichromate. Okay, our today's topic is what? Potassium dichromate. Okay, formula is what? K2Cr2O7. Our topic is potassium dichromate. Okay, first of all, what are the color of potassium dichromate, what are the structure of potassium dichromate. ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो हम पहले देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज़ कलर, इट इज़ व्हाट? डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज कलर. ठीक है, दिस इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज ऑरेंज कलर and this is the structure of potassium dichromate. Okay, means Cr2 Cr2O7. Okay, and this is the structure of Cr2Cr2O7. There are one chromium, there is another chromium. Okay, and oxygen. Okay, there is total 3 oxygen, there is another 3. Okay, 6, and there is another oxygen atom. Okay, and bond angle is what? 126 degree. Okay, and there is one oxygen minus, and remaining 2 oxygen, it is bonded with chromium by double bond. Okay, and there is potassium plus ion, there is another potassium plus ion. Okay, this is the structure of potassium dichromate. Next, how we can prepare potassium dichromate? Preparation, what are the procedure of potassium dichromate? How you can prepare potassium dichromate? It's important point. Okay, you can prepare potassium dichromate from chromite ore. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमाइट ओर. क्रोमाइट ओर से पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया जा सकता है. ठीक है, एंड क्रोमाइट ओर, उसका फॉर्मूला क्या है? FeCr2O4. ठीक है, FeCr2O4, दिस इज व्हाट? क्रोमाइट ओर. ओके, FeCr2O4. Now how we can prepare potassium dichromate from chromite ore? Okay, और भी देख लेते हैं. There are some reactions. Okay, this is what? Chromite ore, FeCr2O4. When it react with NaOH, sodium hydroxide, या फिर sodium carbonate, Na2CO3, in presence of what? In presence of oxygen, then what happen? It will form sodium chromate. Okay, this is what? Sodium chromate, and color of sodium chromate what? It is yellow color. Okay, and साथ में क्या होगा? Fe2O3 प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है जो क्रोमाइट ओर है वो क्या करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? सोडियम क्रोमेट फॉर्म होगा, एंड दिस इज येलो कलर. ओके, एंड साथ में Fe2CO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एनी क्रोमेट विथ एसिड गिव्स डाइक्रोमेट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? एनी क्रोमेट. यहाँ पे ये क्या फॉर्म किया है? सोडियम क्रोमेट फॉर्म किया है. ये सोडियम क्रोमेट हो या फिर पोटेशियम क्रोमेट हो, वो क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये डाइक्रोमेट फॉर्म करेगा. ठीक है, यार इन दैट केस इट इज व्हाट? सोडियम क्रोमेट. तो सोडियम क्रोमेट रिएक्ट विथ एसिड, इट फॉर्म्स डाइक्रोमेट. ठीक है, तो in next step what happen? Sodium chromate, it will be react with acid, there is sulfuric acid. Okay, when it react with acid, then what happen? It will form dichromate. Okay, as you already know, then it form what? Sodium dichromate. Okay, तो हमको प्रिपरेशन क्या करना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, सो सोडियम डाइक्रोमेट when it will react with KCl, then it will be, it form what? Potassium dichromate. Okay, and sodium dichromate का कलर क्या है? ऑरेंज कलर का है. ठीक है, and it is highly soluble भी है. When it react with KCl, then it will be form potassium dichromate. Okay,
This is the preparation procedure of potassium dichromate. How you can prepare potassium dichromate. फिर से एक बार हम देख लेते हैं कैसे प्रिपरेशन हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको पता होना चाहिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए. स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, क्रोमाइट ओर. ठीक है, क्रोमाइट ओर से क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म होगा. एंड क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4. ओके, दिस इज द क्रोमाइट ओर. ओके, सेकेंड क्या है, उसका रिएक्शन वगैरह क्या है. ठीक है, कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमाइट ओर क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट उसके साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. देन इट फॉर्म व्हाट, येलो कलर सोडियम क्रोमेट फॉर्म होगा. साथ में Fe2O3 प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा. एंड यू ऑलरेडी नो दैट एनी type of chromate, it react with acid, it form what, dichromate. There is sodium chromate. Okay, sodium chromate, it will be react with any acid, it will form dichromate. Okay, in next step what happen, sodium chromate, it will be react with sulfuric acid and it form what, sodium dichromate. Okay, and color of sodium chromate, it is what, yellow color, and color of sodium dichromate, it is what, orange color. Okay, and it is highly soluble also. Okay, and when sodium dichromate it react with KCl, then it form what, K2Cr2O7, means potassium dichromate will be formed. Okay, so this is the preparation procedure of how you can prepare potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शंस. रिएक्शन वगैरह है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, रिएक्टिविटी कैसे होगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हीट करने से उसका क्या होगा. ठीक है, वो देख लेते हैं. तो potassium dichromate, when you apply heat, then what happen, it will be form K2Cr4. okay, K2Cr2O7, it is converted to K2Cr4. okay, and साथ में क्या होगा, Cr2O3 ग्रीन कलर का ये प्रोड्यूस होगा एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, and potassium dichromate, when it is react with hydrogen peroxide, then it form what, blue color CrO5 will be formed. And when long standing, it will form what, chromium plus 3 ion green color का ये प्रोड्यूस होगा. ठीक है, and in aqueous medium H3O plus, in presence of H3O plus, then it will be converted to H3O plus. Then what happen, K2Cr2O7, it will be converted to CrO4 minus 2 ion. Okay, again it is a reversible type of reaction. Okay, and it will in presence of OH minus equilibrium stage में आ जाएगा. तब क्या होगा, ये रिवर्सिबली होगा, K2Cr2O7 is converted to CrO4 minus 2, again CrO4 minus 2, it will be converted to K2Cr2O7. okay, this reaction, it is what, reversible type reactions. Okay, again another important reaction is what, potassium dichromate, when it react in presence of hydrogen sulfide H2S, then it form what, colloidal sulfur particle will be formed. Okay, and the color of colloidal sulfur, it is what, yellow color. Okay, next क्या है, K2Cr2O7, when it react with HX, okay, hydrogen halide, then it form what, X2, means halogen, chlorine 2, Cl2, Br2, iodine 2. okay, and K2Cr2O7, when it react in presence of iron Fe plus 2, then it is converted to iron plus, it is converted to what, Fe plus 3. iron plus 3 में क्या होगा, वो convert हो जाएगा. ठीक है, and when potassium dichromate, it react in presence of Sn plus 2, then Sn plus 2, it is converted to what, Sn plus 4. ठीक है, and when it react with NO2 minus, then it will be converted to what, NO3 minus. And when it react in presence of SO3 minus 2, then it will be converted to what, sulfate ion. And it is very interesting, when it is react with potassium iodide, then it what happen, it will produce violet color iodine. ठीक है, iodine produce होगा. And when potassium dichromate, it react in presence of S2O3 minus 2, then what happen, it will be form yellow color sulfur.
ओके, एंड साथ में क्या होगा, सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा. देर आर सो मेनी रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, एज इन प्रीवियस वीडियो you can see, I also discussed reactivity of potassium permanganate, preparation properties of potassium permanganate. In your syllabus, potassium permanganate and potassium dichromate it is present. Okay, and it's very important. तो इसका रिएक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन मेटल आयरन इज रिएक्टेड विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, मतलब मेटल आयरन का क्या हुआ है, रिएक्टेड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका रिएक्शन हुआ है. देन रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन स्टॉप हो गया आफ्टर सम टाइम्स. ठीक है, कुछ टाइम बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया. क्यों, उसका रीज़न तुमको बताना है. ठीक है, तो आयरन के साथ एसिड का रिएक्शन होने से क्या होता है, नॉर्मली आयरन रिएक्टेड विथ, एज फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा या फिर एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा, ये जो आयरन है इट विल बी कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, आयरन इट इज कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एंड इट विल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा. दैट्स वाई क्या होगा, वहाँ पे एसिड का ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, व्हिच डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड प्रिवेंट द contact of iron with acid, thus reaction stop. That's why ये reaction stop हो जाएगा. This is the reason. Okay, when metal iron is reacted with a strong acid then reaction stops after some time, because उसका reason क्या है, reason ये है after some time क्या होगा, ये जो protective layer form हो गया. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होने के लिए क्या होगा, फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, here also I have written the answer of this question. A protective layer of ferric oxide forms which do not react with acid prevent the contact of iron with acid, thus reaction stop. This is the reason why reaction will be stopped. Okay, there is another question is, what is Mn2O7 anhydride, which acid? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है Mn2O7 ये एनहाइड्राइड है या फिर नहीं. ठीक है, अगर एनहाइड्राइड है तो उसका एसिड का नाम क्या है, कि कौन सा एसिड का एनहाइड्राइड है ये. ठीक है, तो आंसर पे देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन भी मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है. ठीक है, जो Mn2O7 है, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, इट प्रोड्यूस H2Mn2O8. ठीक है, फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म व्हाट, 2HMnO4. उसका नाम क्या है, परमैंगनीक एसिड. ठीक है, HMnO4, it will produce HMnO4 and name of this HMnO4 it is what, permanganic acid. Okay, anhydride of permanganic acid, of course it is anhydride. ठीक है, Mn2O7 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, is Mn2O7 ए एनहाइड्राइड. ऑफ कोर्स ये क्या है, एनहाइड्राइड है. एंड कौन सा एसिड का एनहाइड्राइड है, तो आंसर क्या होगा, परमैंगनिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये. क्योंकि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस व्हाट हैपन, it form, first of all it form what, H2Mn2O8. further hydrolysis it produce 2HMnO4, means it form permanganic acid. Okay, and so Mn2O7 answer is what, it is the anhydride of a permanganic acid. Okay, another question is what FeCl3 is found to exist as dimer, explain the bonding. ठीक है, जो FeCl3 है वो क्या होगा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा. लेकिन क्या है क्वेश्चन, वो तुमको जो बॉन्डिंग है वहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो FeCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे है. ठीक है, इट्स फॉर्म डाइमर. ओके, इट्स फॉर्म डाइमर. तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द लाइन बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड. ये जो बॉन्ड
यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज अनदर सिंगल बॉन्ड, देयर इज अनदर सिंगल, आयरन का क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। And this bond, it is how this bond is formed, it is known as 3 center 4 electron bond. Okay, there is iron, there is chlorine, and there is another iron. Okay, this is what 3 center. कितना सेंटर हुआ है, 3 सेंटर, 1 2 3, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज नोन एज व्हाट 3 सेंटर, मीन्स 1 2 3, 3 सेंटर है, ठीक है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, it is formed 3 center 4 electron bond, and FeCl3 act as a Lewis acid as it has a vacant orbital. okay, लुईस एसिड का डेफिनेशन क्या है, जो एसिड है, एसिड का जो आर्हेनियस डेफिनेशन है वो क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन द सब्सटेंस which will produce H positive ion, it is what acid, and which will produce in aqueous solution hydroxyl ion, OH minus ion, it is what base. Okay, and Bronsted-Lowry concept, according to Bronsted-Lowry concept, what is acid? Acid is the substance which will donate proton. Okay, it is what acid, and which will accept proton, it is what base. Okay, but in that case Lewis concept is applicable. Okay, according to Lewis concept, what is Lewis acid? Lewis acid is the substance which has a vacant space, okay, and which will accept lone pair of electron, it is called Lewis acid, and which will donate lone pair of electron, it is what Lewis base. As the central atom iron, it contains a vacant orbital, okay, and it will accept lone pair of electrons, okay. As it is electron deficient bonds, there is electron deficient bond is formed, and it will accept lone pair of electrons as it contains a vacant orbital. That's why FeCl3 act as a Lewis acid. Okay, it acts as a Lewis acid, not Lewis base. As we already know, Lewis acid means which accept lone pair of electrons. Okay, FeCl3 will accept, iron will accept lone pair of electrons because it contains vacant orbital, so it behave like Lewis acid. Okay, another important point is what FeCl3 is used in Friedel-Crafts reaction. ओके, FeCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है, लेकिन व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ये अभी भी हमने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि वो चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट रहने दो, ठीक है। जब ये चैप्टर मतलब फ्रीडल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी तुम्हारे क्लास में मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो ठीक है। तो उस टाइम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उस रिएक्शन और रिएक्शन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट, हैविंग ए मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन, व्हिच वन विल बी हेवियर, ठीक है। वन इज स्कैंडियम क्लोराइड SCCl3, अनदर वन इज आयरन क्लोराइड FeCl3, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, हैविंग ए मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन, मैग्नेटिक वेट मशीन है, ठीक है, ये लैब में है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक वेट मशीन है। अभी क्या करना है, अभी तुम्हारे पास है SCCl3, ठीक है, एंड FeCl3। अभी ये बताना है which one has which one will be heavier, अभी कौन सा क्लोराइड क्या होगा, हेवियर होगा, एंड कौन सा वाला क्या होगा, लाइटर होगा, ये तुमको बताना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर SCCl3 इट इज डायामैग्नेटिक, जो स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम क्लोराइड है वो क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। एंड FeCl3 जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। अगर ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, रिपील करेगा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, रिपील मैग्नेटिक मटेरियल वो रिपील करेगा, ठीक है। एंड जो पैरामैग्नेटिक है वो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा।
ऐसे तुम देख सकते हो ये क्या है, स्कैंडियम क्लोराइड, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक है तो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, वन अपर है तो फोर्स है तो नीचे mg क्या होगा, इस डिरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वेट क्या होगा, mg-f होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। लेकिन इन केस ऑफ आयरन क्लोराइड में क्या है, एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स ये क्या है, एक ही तरफ है, तो उसका जो वेट है वो क्या है, mg+f। ठीक है, वहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे रिपल्शन होगा, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट लाइटर एंड दिस इज व्हाट heavier. Okay, FeCl3 it is heavier substance and SCCl3 it is what, lighter substance. Okay, this is the reason. Next question is what, CrO3. Okay, CrO3 क्रोमियम का जो ऑक्साइड है कैन बी मोनोमरिक और पॉलीमरिक। ठीक है, उसका आंसर तुमको बताना है, जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो मोनोमरिक है या फिर पॉलीमरिक है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स इट कैन फॉर्म मोनोमर, इट कैन फॉर्म पॉलीमर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमरिक स्ट्रक्चर। ओके, CrO3 जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा क्रोमियम के साथ। ठीक है, इट कैन, दिस इज द मोनोमरिक फॉर्म ऑफ CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड का। ठीक है, इट कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलीमरिक, दिस इज द पॉलीमरिक फॉर्म, देयर आर रिपीटिंग यूनिट, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन ये जो मिडिल पार्ट है दिस इज रिपीटिंग, ये रिपीट होता जाएगा एंड ये क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म करेगा। तो CrO3 इट कैन फॉर्म ऑल्सो polymer. Okay, it is monomeric in nature, also it is polymeric in nature. And another important point is that CrO3 it also form benzene like structure. Okay, it can form cyclic structure also. Okay, this is very interesting. Okay, you can see this is the cyclic structure of CrO3. Okay, question is what, draw a trimer of CrO3 which will be more stable मेंटेनिंग सिमेट्री। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट करके के दिया हुआ है, SO3 एंड CrO3 हैव सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे CrO3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का भी वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द ट्राइमर फॉर्म ऑफ CrO3। ओके, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, तो डी ब्लॉक फिनिश्ड है। ठीक है, तो F ब्लॉक आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, आई विल स्टार्ट F ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश्ड हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियो है, तुम लोग वो देख सकते हो। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करना। ठीक है, ओके, बाय।